Hi, hi Rajita. Good evening. Uh, Let me know, am I audible right? Just confirm me. Is my voice is audible right properly? Do text in our chat box and confirm. Yes. Once again, good evening. Guys, we'll start our today's session within 2 to 3 minutes. Okay. I'm waiting for 2 to 3 schools. If they are joined means without wasting time, we'll start our class. Okay. Just 2 minutes or 1 minute. Sure now. May I know which school you are from, Rajita? In today class also, guys, we are talking about the gravitational field only. Okay. As we are, yeah, as we are actually, right, in the last class, we are talking about gravitation and few numerical problems we discussed here. Okay. Gravitational field के बारे में कुछ भी नहीं पता दिया गया है. Clear? That's why today we are going to discuss more about gravitational field. क्या है? Gravitational field. Let me know through the chat box. Am I audible right properly to everyone? I need confirmation whether I'm an audible or not. Right? Can I will suggest it to you if I'm not audible to you means I will raise my voice still. Okay? For that reason. And feel free to text in a chat box. Okay, no need to hesitate. Meanwhile, if you are getting any doubt inside the class while doing class means please drop your doubts in a chat box. Cool. And those who are watching on YouTube, good evening to all of you. And if you are also feeling any doubt, please to drop a chat, drop doubt in a chat box. Clear enough? So it's time to start our today's session. Let's start today. Gravitational field. Before the gravitational field, yesterday few points. Meanwhile, yeah, hi, good evening, Mandia guys. Okay, one confusion came. How to solve one problem based on the gravity. Actually, I will tell you that one. Then let us take a recall what we discussed in the previous class. Previous class is completely about the numericals only. Correct now? Numericals we discussed, right? Based on the gravitational force. Based on the gravitational force. क्लियर है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए इक्वेशन क्या होता है?
Just remember, F is equal to G m1 m2 by r square. Here m1 and m2 are the masses and r is the separation distance between the two masses. Clear enough? And this G value we call this one as an universal gravitational constant. इसका एक value होता है. The value of G will be 6.67 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square per kg square. This is a constant value. Where you go, if you want to find out the gravitational force, means constant value will be same. It is not depend on any medium, anything. Okay, though object का बीच में होता है ना constant value, it will be same everywhere. Clear enough? Okay. Yesterday where we start, I will tell you. Actually मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करता था इस टाइम. क्या है? एक मास है m1, दूसरा मास है m2. ये दोनों मास सेम ही है. ओके, meanwhile we can write m1 is equal to m2 and तीसरा मास है ना, the third मास, उसका मास है 2m. ये दोनों का मास m1 m2 का m है, तीसरा मास है m. And I gave a equation like that. Equation क्या था? Just a minute. Where I wrote down? Here it is. F m is equal to x g m square divided by r square. Second equation I given like that. F2m is equal to y 2 times g m square divided by r square. Not r square, actually a square. A square here separation distance between a particle. A massive particle है ना, इसका separation distance था वो. Right? Okay. What I said, we need to find out the value of x and y. That's it. पहला क्वेश्चन क्या था? Force on mass m था. Any one mass, you take either this one or this one. ये दोनों को ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? If I take second mass, इसके ऊपर, इसके वजह से दो फोर्सेस लग रहा है. एक फोर्स, ये मास इसके ऊपर लगा रहा है in this direction में, means force will be experienced by this particle mass m1, and second mass के वजह से here also it is experience of force. Right, what I'm saying? Are you getting my point? Here first mass के versus force f था, दूसरे मास के 2m है ना इसका मास, इसलिए इधर फोर्स था 2f, and ये दोनों को फोर्स, it is creating some angle theta here. It's a right angle triangle, that's why we took here 60 degree, and net force will be acting in this direction I told. Right, to find out the net force here we use the law of parallelogram. Correct? Now when you use the law of parallelogram, f value will become out to be under root of f1 and f2. लिखना है f1 square plus f2 square का वैल्यू कितना है इधर 2f. Write down here 2f2 whole square plus 2f1 into 2f2. f1 f2 है, f2 का वैल्यू 2 है into cos theta. थीटा का एंगल कितना था? 60 डिग्री सब्स्टिट्यूट करता. Then we will get under root of f1 means it's a force. Generally I'm going to take f1 equals to f2 is equal to f. Okay, then it will be f square plus 2f square means whole square है 4f square plus 2 to the 4 f square. Cos theta means cos 60 है. Cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है. Here 1/2. ये 2 से 2 to the 4 मर गया, 2 only remaining. Then remaining thing will be just right. Actually it is lagging here. I don't know in this corner what is happening with my computer. It is coming very late. That's it. And guys, meanwhile, if you are getting any doubt, means please drop your doubt in the chat box. I'm trying my level best to clear your doubts. Okay, इधर 2f square है, 4f 6f square हो गया, under root of one more 7f square हो गया. इधर f square से root cancel हो गया, then it will be root 7 into f. Okay, ये root 7f है ना, किसके ऊपर लग रहा है force? ये m के ऊपर लग रहा है. Hence we can say this is the force on m. मालूम हो गया ना, force on m. And what is the force here? We need to write down here force. Force क्या होता है? दो force लग रहा है ना, under root of 7. इधर g m into m, दो masses है इधर, m square by
a square. Right? Like this we derive. Just given an idea about it, how to derive this one. Principle of superposition apply किया इधर and we derive it. Clear है ना? I hope it is clear, right? Once again, I explain this topic. That's it. We'll move on to the next topic today. I will give you a wonderful topic and questions today. No worries. Will we move on? Do text me in the chat box, Mandya. Okay. चलो चलते हैं. Next question. Next question था. Yes. देखो इधर भी सेम है. We need to find out the force acting on this point mass. This is a point mass of mass m. इधर और एक मास है, इसका मास m है and उसका लेंथ है कैपिटल L. Length of the mass is capital L, or else you take L itself, no problem. L and mass will be capital M. ये दोनों का बीच में क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है. एक ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू बताना चाहिए. एक्चुअली दिस स्मॉल m का मास है ना, ओके, दिस मास का डिस्टेंस है फ्रॉम द बिगर मास विल बी ये, मान लो ये है, ओके. ये बड़ा मास का लेंथ कितना है? L है, L है, okay. And now I want to know that what will be the gravitational force between these two objects. Can you guys take 2 minutes of time and tell me what is the answer for this question? I'm asking, the question is very simple. एक छोटा सा mass है, finite mass. It's a point mass. Okay, it is actually located at a distance of ये from a बड़ा mass, means capital mass. Okay, उसका mass है m, उसका length है n. Now I'm asking that what will be the gravitational force exists between these two objects. Okay, chat box is open. I'm expecting the answer from your end. Take 1 minute of time and let me know. 1 or 2 minutes. अरे यार, जनरली ओके, देखो इधर ग्रेविटेशन फोर्स निकालने के लिए इक्वेशन क्या है? G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है ना. इधर 2 मासेस लगाना है. 2 masses means here generally what we will do, G है, m1 means small mass m है, capital mass m2 means capital M है, divided by r square means separation distance कहाँ हो गया? You people will think like that. Yes, of course, separation distance we will take for the capital mass for the mid. Up to this mid क्या होता है? Total length L means this will become L by 2, and from L by 2 to m, L by 2 plus ये दोनों का मास, ये दोनों का मास ऐड करने से डिस्टेंस मिलता है, करेक्ट ना? देन द आंसर विल बिकम L by 2 plus ये होल स्क्वायर. Like that you will think and you will write them directly. If you do like this, definitely I am saying it's a wrong one. It is a wrong one. Why it is wrong? Do you know, guys, why it is wrong? At least say this one also. Say it this one. Why this is wrong? If I do like this means it is wrong actually. Why? Why? Because gravitational force holds good only for point masses. I told point masses. Of course, this is the point mass. Small m is a point mass, but comparatively this mass is a capital M है ना, ये बहुत बड़ा मास हो गया, इसलिए this is not valid. At this condition कैसे कैलकुलेट करना है? देखो ध्यान से बोलता है, इधर देख, सुनो. This is a small mass m. जैसे small mass m को इधर लेना पड़ते हैं हमको. What I will do,
I will take a small piece of mass here. ओके इसका मास होता है dm. dm मींस कैपिटल m में स्मॉल मास I took. मैथ्स में आपको पता है ना, दैट इज व्हाट ये dm का लेंथ है ना, ये आई एम गोइंग टू टेक dx. क्या है dx है. देखो इधर नाउ dm मास के साथ ये मास है ना, छोटा छोटा मास पॉइंट मास हो गया. नाउ वी कैन अप्लाई द ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट बिटवीन these two objects. Similarly, if you're going to apply here means it will become wrong because एक छोटा मास नहीं है, इसके साथ बहुत सारा मास है. कैसे? If I go to shift left towards the left means here also I can take one more छोटा मास, small mass. इसका मास होता है dm2 and इसका लेंथ तो है dx2. Similarly, इधर I will go means again I will get dm3 and dx3 of length. Correct what I'm saying? up to this end, last end है ना, अब तक dm mass क्या होगा है, जुड़ा हुआ है. all the dm masses are actually joined together. These dm masses joined together to make capital mass m. Clear है ना मेरा बात? Now what we need to do, we need to sum all the dm mass to get the mass m and we need to apply the gravitational force constant. कैसे? देखो इधर बोलता हूँ, एक एक की बोलता हूँ. मैं इसको रफ करता हूँ मैं थोड़ा. This is not required now. I think you understand, no? That's why it is not required. Correct? After understanding why we need to write here, this is not. Okay, देख इसका लेंथ मान लो from this point the small mass है ना, उसका लेंथ है x. ओके मान गया हम. ये स्मॉल मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ये मास के मास से, स्मॉल मास से ये छोटा मास dm है ना, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है. अब वी विल राइट एक्चुअली फोर्स ऑन dm फ्रॉम बाय m. करेक्ट ना? इसको हम लिखते हैं, राइट व्हाट आई एम सेइंग. Similarly, if you're going to substitute this one, 1 means next one force on next step. If I go to here, I will take means force on dm2 by m2. Sorry, it is not m2, just m only. It is not m2. This is m only. Okay, and then similarly force on next step dm3 by m. Like this, we need to add all the forces. Adding is nothing but mathematics में इंटीग्रेशन करना है. क्या करना है गाइस? इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेशन करने से हमको क्या मिलता है? टोटल फोर्स, नेट फोर्स मिलता है. इधर छोटा सा मास है ना, दैट्स व्हाई इधर छोटा सा फोर्स मिलता है. इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ता है. क्लियर? इफ यू डू लाइक दिस मींस देन इट विल बी करेक्ट. सिंपल सा बात है, इधर कुछ भी नहीं है. इसको इंटीग्रेट करने से क्या मिलता है आपको? नेट फोर्स मिलता है between a mass and as well as the total mass. It will be equal to integration of f. How we will write now? g एक है छोटा मास m और एक मास है ना m1 m2 लिखना है. m1 छोटा मास हो गया, m2 है ना, m2 लिखने में we need to write dm divided by separation distance कितना है x को इंटीग्रेट करना है. That's it. x अब तक हुआ. Right now, if you have any doubt up to this point, please let me know in a chat box. Correct now? Then we need to integrate this one. Correct? Sorry, your square है ना, x square आता है. Printing mistake. Okay? Printing mistake. Now we need to integrate this one from where to a where. Actually देखो mass m है ना, ये पहला dm है ना, distance x में है. Final one will be up to l length है. L length है. Then the integration should be done from at a distance a से up to a plus l. इससे इधर तक इंटीग्रेशन करना पड़ता है. Done. If you will write up to this point means आधा खत्म हो गया, आधा खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट क्या होता है देखो. नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ a to a plus l. इधर g स्मॉल m है और क्या करते हैं, ये g स्मॉल m है ना, इसको बाहर लेता है सिंपल से.
क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं है ना, इसलिए टेक g and m outside of integration, remaining thing will be 1 by x square into dm. Finally simplification आ गया guys. So many of I observed my students also, when this form will become no, suddenly they got in, if they know integration means they will do integration, but इधर थोड़ा रुकना जरूरी है क्योंकि x square के साथ इधर x आना है. If it is not x means you can't integrate, correct? Then next step क्या है, इधर x लेके आना बहुत जरूरी है. कैसे लेकर आना है, देखो इधर छोटा सा मास है ना dm, इसको रिप्लेस करना पड़ता है. कैसे रिप्लेस करना पड़ता है, देखिए इधर मैं बोलता हूँ, यूनिटरी मेथड है. ये टोटल मास कितना है, m है इसका, करेक्ट ना, पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ देना है. सिमिलरली बड़ा मास था, छोटा मास का मास कितना होता है, dm होता है, और छोटा मास का यूनिट लेंथ क्या होता है, dx होता है. I took that time, correct ना. Now we required this dm, that's why take dx to left hand side, then it will become dm value will be equal to m by l into dx होता है, correct ना. Finally we got the value of dm. Substitute this one here. If you substitute this one here, no, next देखो इधर ध्यान से सुनो, g small mass m and integration from a to a plus l, and now 1 by x square is there. I know you are pretty well in integration. 1 by x square का value होता है, sorry, keep it this one. Next we will integrate it, no worries. 1 by x square, dm का value substitute करो, dm का value है m by l into dx, खत्म. Take m by l outside of the integration, then it will become g small m capital M outside divided by l outside, integration of a to a plus l 1 divided by x square into dx. Up to this point is understood to everyone, right? Let me know in a chat box quickly once. Let me know in a chat box quickly. Is it understood up to this point? How I took dm when dm is there and function is x is there, you can't able to integrate because dm is not a function of x here. Clear है ना? We'll integrate this one in the next slide. देखो इधर क्या करता हूँ मैं, आंसर आ गया था हमको, क्या आया था इधर, g capital M small m divided by l and integration from a to a plus l 1 by x square into dx था, करेक्ट ना. 1 by x square का इंटीग्रेशन होता है गाइस minus 1 by x, carry this one here, g capital M small m by l, इधर लिमिट को अप्लाई करना पड़ता है a to a plus l, इसका इंटीग्रेशन minus 1 by x, limit will be a to a plus l. Clear na? Now apply the limit. The next step will be g m divided by small l into upper limit minus x का प्लेस में इसको रिप्लेस करना है, that's it. 1 divided by a plus l minus lower limit, minus into minus क्या होता है, प्लस होता है. Lower limit will be x को a रिप्लेस करता है ये, करेक्ट ना. इसको रीअरेंज कर लो, कोई बात नहीं. g m divided by l into 1 by a, ये प्लस ही है साइन में, माइनस ऑफ 1 by a प्लस l है. क्लियर है ना. इसको इधर डिराइव करता हूँ मैंने, देखो g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ 1, इधर एलसीएम लेने से हमको मिलता है a इंटू a प्लस l, in numerator cross multiplication a plus l minus a plus a get cancel each other, and this l get cancel each other, and finally we got the net force acting on the capital mass m by the small mass will be g capital M small m divided by a into a plus l. Clear enough? Is it clear? This is what the answer. Like this, find out the
answer. Hope it is हाड clear. कुत्र्यानं तुम्हाला नाही म्हणून मला घाड कुत्र्यानं हाड. Means we'll start our amazing one more topic today, that is gravitational field. Clear? Is it clear to everyone? Who is this admin? Hi. My dear guys, is it understood to everyone, right? त्यांची फिटिंग करा आल्या बाले आम्हाला जामखेड मध्ये दिसला होता. आम्ही चौकात आलतो ना तिथं बसलो होतो ते बीफ खानावर नाही का कॅफे नॉज मामा येऊस तर मामा म्हणते ते I think unmuted everyone now. Okay, hope it is understood, right, to everyone. Okay, cool. If it is understood means we'll jump to the next topic, right? Next topic क्या है? Gravitational field है. पता है क्या है gravitational field क्या होता है? Guys, anyone? I will tell you what is this gravitational field. Okay, field से ले लूँगा. First, we'll go through this one. Space surrounding the material body in which gravitational force attracts can be experienced is called the gravitational field. क्या है? कुछ भी समझ में नहीं आता है. अलवा ये नहीं गोता गला. देखो, this is physics. क्या है? Physics है. Physics के ऊपर मैं बैठा हूँ. क्या करो मैंने? इधर I sitting on the physics. Okay, I know physics. If few people means like students will come across means I will teach them to physics. Correct now? That's why they are recognize me as a physics teacher. Meanwhile, मेरा अगल बगल में means around me what is there? Physics नाम का एक field is there. क्या है? If I am standing here means एक field होता है मेरे पास. वो field क्या है? Physics होगा. Because I know physics, people will recognize me as a physics teacher. That's why this surrounding will be physics. Clear enough? Now I know little bit of physics concept. That's why I bounded this boundary in this area only. If more than 2 years of experience, if I get more than 2 to 3 years of experience, again मेरा field है ना इतना नहीं होता है, बड़ा होना चाहता है. Means I know much more physics that time, 2 more years after. Correct now? That time my field will be more compared to the first time. Why I'm saying this one? Because there is an analogy behind this one. That's why. क्या है? If I'm going to take on particle like this one. Okay, this is a particle of mass m है. Okay, इसका एक नेचर होता है. क्या नेचर होता है? इसके पास में एक फील्ड होता है. इसका पास में क्या होता है? एक फील्ड होता है. Mass produces a field which always attracts something when another mass will be come in this field. Means if consider another mass came here, उसका mass small है में. It is this mass है ना, capital mass. It is trying to attract the small mass towards it. Means if field में उसका attraction हो रहा है, means it makes experience some forces on the small mass. That is known as the gravitational field. Gravitational field actually came from mass. Any body which having mass, it exerts some forces on another objects. Okay, understood right what I'm saying? If mass is this much, that's why the field bound will be this much only. If I'm going to take our bigger mass means mass will be there here means then again some more field will be extend. Means मास बड़ा होता रहता है ना, इससे फील्ड भी ज्यादा होता है. कंपेयर कर लो, अर्थ कितना बड़ा मास है, उसका फील्ड क्या होता है? कंपैरेटिवली लार्जर टू दी कंपैरेटिवली स्मॉल स्टोन. राइट व्हाट आई एम सेइंग? दिस इज व्हाट ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड इज नथिंग बट ए फील्ड है, इमेजिनरी फील्ड. ये क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इज एन इमेजिनरी फील्ड.
लिख दो इसको, इमेजिनरी फील्ड होता है. Okay, any object which will become in that field means it will experience some force by that mass. मान लो इधर एक मास आ गया ना, देखो एक कैपिटल एम है, स्मॉल एम है, टेस्ट मास. ओके, दिस कैपिटल एम है ना, इट इज ऑलवेज क्रिएटिंग द फील्ड. मान लो दिस इज फील्ड, ये क्या है, फील्ड है. In this field, if this chota mass will become means this chota mass will experience, क्या करता है, it experiences force. Force experience करता है बड़ा mass से. That is called the gravitational field. Hope it is understood, right? Hope it is understood. And आपका क्वेश्चन भी आता है इधर, आपका एक क्वेश्चन भी आता है, सर ओके कैपिटल मास में उसका फील्ड होता है, व्हाट अबाउट दिस स्मॉल एम, स्मॉल मास है ना, उसका भी मास है, उसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ना. यू मे बी आस्क लाइक दिस, यस होता है, बट कंपेरेटिवली लार्जर मास, एक छोटा मास का फील्ड उतना बड़ा नहीं होता है. द छोटा मास का फील्ड होता है बहुत छोटा होता है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट इट. Okay, always you need to remember one thing, the gravitational field is produced by big mass. Big mass, I will replace this one, big mass क्या होता है, actually physics बोल दिया. Okay, इधर आता है, ये बड़ा मास है ना, इसको हम बोलते हैं सोर्स मास, इसको हम बोलते हैं सोर्स. एंड दिस छोटा मास है ना, इसको हम बोलते हैं टेस्ट मास. टेस्ट मास को which mass we are going to keep in that field, and we were actually looking for the what is the force experienced by that particle. That particle mass we called as a test mass, and the particle which is actually producing the field, that is known as the source particle. Clear enough? This field is always produced by the big mass. I told no, this big mass is nothing but, now guys, can you tell me what is this? It is actually source mass. सोर्स मास होता है. ओके, इसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होता है. एंड स्ट्रिक्टली नोट डाउन ऑन पॉइंट, नोट पॉइंट क्या है ना, स्मॉल एम है ना, दिस इज अ टेस्ट मास. टेस्ट मास विल नॉट प्रोड्यूस gravitational force. Clear? Hope it is clear. Please do give a notification in a chat box, guys. I want to know, right, how much you understood, where you are actually lagging. That's right. Same ही है. Okay, gravitational force को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं. It's a physical quantity. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मान लो ये बड़ा मास है, इसका मास है में, ये स्मॉल मास है ना, टेस्ट चार्ज और टेस्ट मास, इसका मास है स्मॉल है. एक्चुअली इसका एनालॉजी भी आई विल गिव द एनालॉजी ऑफ दिस वन टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आल्सो, हाउ इट विल बी वेरी एंड एवरीथिंग. उधर भी आता है टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज. ये टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के वजह से टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा दिया, आई विल टेल दैट वन आल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, मान लो there is a mass small m, test charge at a distance r from the capital M. Okay, this test mass है ना, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है कैपिटल मास towards it like this. It is trying to pull the small mass. Force लगा रहा है. If it is apply the force means in this direction, object should be come in this direction. The force will be acting in this direction on the small mass M. Force कौन लगा रहा है? Capital M. Force applied by capital M, experienced by small m. This is experiences. This is experiences the force which is acted by capital M. Clear है ना बात? Okay. If it is experience force means gravitational field में, okay, gravitational field को हम कहते हैं E word में. E stands for actually gravitational field. Gravitational field. How to
कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड बोल सकते हैं हम मैथमेटिकली। कैलकुलेशन के लिए सिंपल तरीका है ग्रेविटेशनल फील्ड ई स्टैंड्स फॉर गाइस gravitational field, field strength, whatever you call, no problem. Okay, gravitational field is equals to force experienced by test charge per unit mass। वो मास कितना था, उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, इसको कैलकुलेट करने से आपको क्या मिलता है, ई वैल्यू मिलता है। कीप दिस वन इन योर माइंड, कीप दिस वन इन योर माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, ई को कैलकुलेट करना है, मींस ई स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय उसका मास। इसको हम कहते हैं gravitational field intensity, we can call field intensity also, no problem। इसको हम कहते हैं field intensity। लिख दो, write down this one, write down this one। इसको हम कहते हैं gravitational field intensity। field intensity, it's a vector quantity guys, actually this is a vector quantity। इसका डायरेक्शन किधर होता है ना, फोर्स इन विच डायरेक्शन इट विल बी एक्ट, इन द सेम डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी भी होता है। देखो इधर फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, नो, देन ग्रेविटेशनल फील्ड का भी डायरेक्शन वही होता है। दिस इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर, होप इट इज क्लियर। टुवर्ड्स द मास, टुवर्ड्स द कैपिटल मास, टुवर्ड्स द सोर्स मास के तरफ होता है। क्लियर है ना? Okay, come to the next point। okay, इधर देखो और दो वर्ड्स बोलना चाहता हूँ। everything will be settled down, already I told you the things which are important here। here we calculated the gravitational field intensity। intensity के लिए फार्मूला क्या लिखाते हैं हम, what we written here, E is equal to force experienced by unit charge। ये फोर्स का डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होता है। क्लियर है ना? ओके, देन व्हाट विल बी इट्स एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है, देखो फोर्स के लिए एसआई यूनिट होता है न्यूटन, डिवाइडेड बाय मास के लिए यूनिट होता है केजी। न्यूटन पर केजी, इट इज द एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या, नॉट सॉरी फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड, सॉरी इट्स एन ग्रेविटेशनल फील्ड। आई विल राइट हियर। ओके, बार बार हो ही आता है यार, क्या करना है। EG stands for gravitational field, gravitational field। clear? okay, that's great। we can simplify this one, we can simplify also this one। I will tell you here one neat question आता है। क्या आता है neat question, देखो इधर। if I simplify it means न्यूटन को कैसे लिखते हैं हम, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिनोमिनेटर ये न्यूटन का हो गया, डिनोमिनेटर में एक केजी है ना, उसको भी लिख दो इधर, केजी हो रहा है, केजी केजी कैंसल, रिमेनिंग थिंग विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे 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 देखो इधर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, इट इज एक्चुअली SI यूनिट ऑफ व्हाट, कैन यू टेल मी गाइस, फॉर व्हिच फिजिकल क्वांटिटी वी आर यूजिंग मीटर पर सेकंड एज अ SI यूनिट। This is one of the best question I ever asked everyone। May I know, Mandya, Rutuja, admin, may I know for which physical quantity this meter per second square is a SI unit? अरे यार, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज SI यूनिट फॉर एक्सेलरेशन। कहाँ है आप, राइट? एक्सेलरेशन के लिए SI यूनिट होता है, करेक्ट ना? ओके, दैट्स ग्रेट गाइस। देखो इधर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है ना, उसका SI यूनिट होता है न्यूटन पर केजी, और आल्सो इट इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आल्सो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आल्सो, ओनली इन द केस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। किधर, ओनली इन gravitational field intensity, not everywhere। don't put then
If suppose someone will be asking you, a vehicle is moving with a starting velocity 3 meter per second. After 3 seconds, it will be moving in a velocity rate around 6 meter per second. What will be the acceleration? Means वो क्या होता है मैग्नीट्यूड रख के राइट मीटर पर सेकेंड ओनली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डोंट राइट न्यूटन पर केजी उधर क्लियर डोंट राइट न्यूटन पर केजी उधर दिस इज अ स्पेशल थिंग व्हाई आई टोल्ड नो इन नीट में क्वेश्चन पूछता है नीट में राइट क्या है अमॉन्ग द फॉलोइंग which are the SI unit have a same physical quantity or same SI unit for the physical quantity following physical quantity. Physical quantity देता है acceleration and then gravitational intensity. I say दो equation देता है which one will be odd we need to remove that one means we need to obtain one correct answer from the given options. That time it will be helpful. Okay, it is a correct one. Clear है ना? Is it clear, right? If it is clear means we'll move to the next one. Field due to point mass. क्या है point mass? Already I told you. This is a capital mass. We call this one as an source mass. ये क्या है? Source mass है. This is a small m, right? Small m means we call this one as an test mass. इसको हम कहता है test mass. एक capital mass के वजह से एक कैपिटल मास की वजह से इधर इन दिस रीजन में एक फील्ड क्रिएट होता है इफ दिस टेस्ट चार्ज और टेस्ट मास विल बिकम इन दिस फील्ड मींस इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स टुवर्ड्स इन दिस डायरेक्शन करेक्ट इट एक्सपीरियंस सम फोर्स राइट व्हाट आई एम सेइंग राइट व्हाट आई एम सेइंग cool नो कोई प्रॉब्लम नहीं एंड देन इसका मास था स्मॉल एम फोर्स है फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकल दिया आप E is equal to or as Eg is equal to force experienced by test mass divided by their mass. ठीक ठीक ठाक है कोई प्रॉब्लम नहीं ओके नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट हाउ वी कैन रिप्लेस दिस F. Is there any problem to replace this F or is there any condition? देखो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट होता है ना ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी एग्जिस्ट इन बिटवीन दीस टू ऑब्जेक्ट्स व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स हियर G into m1 m2 बाय सेपरेशन डिस्टेंस मान लो यार r है r सेपरेशन डिस्टेंस में है r स्क्वायर हो गया इसको इधर डाल दो when you substitute this one here देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी gravitational field intensity will be equal to force कितना है G m1 m2 divided by r square इधर एक m है उसको भी सब्स्टिट्यूट करो इधर क्लियर नेक्स्ट स्टेप देखो gravitational field intensity will be equal to G m1 stands for capital mass m लिख दो m2 stands for test mass m लिख दो इधर it did not came it came okay then divided by m r square देखो इधर ये small m से small m finished next remaining thing will be here electric field sorry gravitational field intensity will be equals to G m divided by r square okay this is the electric field due to point mass एक छोटा सा point mass उधर रखने से वो मास कंसीडर करना पड़ता है उस समय क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट मास नॉट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इफ दे आर आस्किंग अबाउट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी प्लीज टेक दिस फॉर्मूला ओके इफ दे आर आस्किंग ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट मास कब से एक ग्रेविटी फील्ड के अंदर आने से वजह से ये इट इज एक्सपीरियंसेस नो सम फील्ड दैट फील्ड स्ट्रेंथ को बता रहा है इधर Gm/r². क्लियर एक दो प्रॉब्लम करते हैं उसके बाद मालूम हो जाता है क्या है सब कुछ ठीक है ना राइट what I'm saying give me a high five if you are understood means guys at least do text me in a chat box
I'm only the person since from an around 40 minutes, 45 minutes may point from 45 minutes I'm only the person talking. I'm expecting from your end also. Try to ask some doubts. Okay, I will try to resolve. And I don't know whether something I want to teaching you means I'm expecting something from your end also, right? And successfully your exams also खत्म हो गया. If you know this chapter means next chapter तो बहुत आसान होता है. यमुना, hi. Jenny Mandia, guys. Okay, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं. इधर देख, इधर देख. ओके, मान लो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्या करना है इधर बोल करना. ये मास हिम है, ये भी मास हिम है. देखो, आई एम अगेन सेइंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है ना, इसका force experienced by unit mass. Okay, this is only for electric field intensity. That's it, single mass. If it is you're going to take for the a point mass, if it is in a field, उसके ऊपर gravitational field intensity कितना लग रहा है उसको कैलकुलेट करना है. मीन्स आपको यूज करना है दिस फॉर्मूला को, विच वन, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. क्लियर है ना? आर स्क्वायर स्टैंड्स फॉर हियर, R square stands for, just a minute, my laptop hang, I don't know. Okay, R square stands for distance between a test charge to the source charge. ये दोनों फॉर्मूला कब यूज करना आपको पता होना चाहिए. उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सॉरी वेक्टर को भी जानना चाहता हूँ. ओके, नाउ देखो इधर ये दो मासेस है. Okay, from point P, call this one as a point P. From this point P, these two masses are separated at a distance r each. R each. Okay, just a minute, guys. Sorry for the interval. Sorry for you guys. Okay. Okay, coming to the point, what I'm explaining. At this point P, we need to calculate what will be the field intensity due to these two masses. कैसे कैलकुलेट करता है? ये मास है ना, ये मास के तरफ क्या होता है, ये पॉइंट P के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है E1. ये मास है ना, इसके तरफ भी एक इंटेंसिटी होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, विल कॉल E2, विल कॉल E2. करेक्ट ना? नाउ देखो, इट्स अ सुपर अमेजिंग ट्रिक है इधर. क्या है ना, E1 इन E2 वी नीड टू ऐड ईच अदर, दैट्स इट. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मींस नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए मींस आपको क्या करना है, E1 के साथ E2 को ऐड करना पड़ता है, दैट्स इट. बट इधर E1 and E2 not in a exact direction, either not in a x axis not in a y axis. at this condition क्या करना है, ये E1 and E2 को आपको क्या करना पड़ता है, डिस्टिंग्विश करना पड़ता है. फ्रॉम वेयर, मीनवाइल मींस व्हाट, रेजोल्यूशन करना पड़ता है. Resolution can be done in two ways. If I'm going to consider this is the main axis. If I'm going to consider this is the main axis, इन दोनों को बीच में एंगल है, एंगल इधर हम लिख रहा हूँ फाइ ले लो, फाइ एंगल है मींस ओके. ये आधा एंगल कितना होता है, ये आधा एंगल है ना, दिस इज विल बिकम 5/2. इट इज आल्सो बिकम 5/2. करेक्ट ना? मींस फॉर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वी कैन राइट, राइट हैंड साइड प्लस. मींस एंगल कितना वेरी हो रहा है, -5/2 से +5/2 तक वेरी हो रहा है, इतना एंगल में है. करेक्ट ना? नो नीड, इन अ नेक्स्ट प्रॉब्लम आई विल एक्सप्लेन दिस वन. नाउ जनरली वी विल टेक लाइक दिस. क्या लिखना है जनरली आई विल टेल यू, डोंट वरी. देखो इधर एंगल थीटा से सेपरेट हुआ है, करेक्ट ना? नाउ
along angle, this is the vertical axis है ना, इस इसको मैंने मेन क्वेश्चन कहता हूँ. ओके, इससे एंगल थीटा बन गया, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी along in this direction will become E1 cos theta along this direction, and this direction क्या होता है, E1 sin theta होता है. दिस इज फॉर मास, दिस वन ए मास के लिए. सेकेंड मास है ना इधर, उसका भी इधर ही होता है, मास सेम है, मींस इधर E1 था, and again it will be add in the same direction E2 cos theta, and sin theta किधर आता है, इधर आता है E2 sin theta. देखो इधर दो masses are same, दो masses are same, hence they can produce the same electric field. इधर E1 sin theta and E2 sin theta same magnetic field है, but opposite direction में, correct ना? That's why these two will get cancel each other. Then net electric field will be in along only vertical direction. Vertical direction में होता है. Then net electric field can be written as E1 means here E1 cos theta plus E2 means E2 cos theta होता है. And moreover E1 value will be equal to E2. If I am going to take like this, means net electric field will be E1 E2 दोनों same ही है. We can say here E cos theta plus E cos theta, 2E cos theta. This is what the net electric field which is acting. I told you guys actually electric field is a vector quantity. कौन सा quantity है? This is an vector quantity. In which direction this is acting? That is also they are asking. Right, what I'm saying? Correct now. If I'm going to take this one as an x-axis, this is a y-axis, means unit vector along the x-axis क्या होता है? I cap is a unit direction. Y-axis में j cap is a unit direction. Correct now. Then direction of this one will be along j cap. Clear? Hope it is clear, right? How I calculated net electric field between the two masses. Sorry, gravitational field. क्या हो गया ना यार, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये चैप्टर बहुत क्लोज है. व्हेन आई एम राइटिंग ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सडनली इट विल बी कम आउट फ्रॉम माय टंग, आई कांट अवॉइड इट. केजीएफ में है ना डायलॉग, वैसा हो रहा है इधर, आई कांट अवॉइड इट. दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं. दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलोंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है ना? Let me know in the chat box. Hope you all understood, right? और एक small problem कराता हूँ मैंने. From this problem, definitely you will understand better than this one. Okay? Problem क्या है? देखो इधर. सुनो, ध्यान से सुनो. We need to find out the gravitational field at x. x के ऊपर gravitational field find out करना है, and as well as y के ऊपर करना है. कैसे करना है? देखो इधर. They given mass m, 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 तीनों मास सेम ही है, m1 m2 m3. I will write here m1 is equal to m2 is equal to m3. all three masses are same. At this point x, x के ऊपर gravitational field किधर रखता है? मास m2 के तरफ, in this direction electric field, correct ना? m1 के तरफ in this direction, right, and m3 के तरफ in this direction. These are the electric field, sorry, gravitational field direction, intensity of gravitational field direction, E values along m2, along m1, along m3. Clear? Up to this point is clear now? Nothing much is there. We are going to find out the value of electric field intensity. Net electric field intensity we have found out. In which direction it is acting. Suppose x पॉइंट के ऊपर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, मींस क्या होता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू. दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट. क्लियर? ओके. E4 ऊपर है, मींस y एक्सिस में है, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड E1 एंड E2 है ना, सॉरी E3 है ना, ये दोनों नॉट इन x एक्सिस, नॉट इन y एक्सिस. That's why what we need to do, we need to calculate this one, means we need to resolve this two in x and as well as y axis. कैसे resolve करता है? देखो इधर, I will write in a separate, okay, separate form में लिखता हूँ इधर.
this is E2, this is E1, this is camera E3. Okay, now देखो इधर E2 is in y-axis, there is no problem. Sorry, just 2 minutes, guys. Okay. Okay, देखो इधर एक्चुअली ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तीनों को एंगल 60 डिग्री होता है. इधर देखो हियर फ्रॉम दिस वन, क्या बोलते हैं इसको, स्पेशल कलर से मेंशन करता हूं मैंने. देखो इधर, दिस इज द एंगल फ्रॉम द राइट एंगल आई टुक, करेक्ट ना. ये दोनों का बीच में एंगल कितना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल मींस 60 डिग्री होता है. फ्रॉम दिस ओनली मींस it will become 30 degree. Similarly, here also it will become 30 degree. This is also triangle. This 30, this is 30, 60 हो गया. Remaining this angle will be 120 होता है. Correct है ना what I am saying? We'll finish. No worries. Okay. अच्छे से समझना जरूरी है इधर. Okay, what I am saying? This is will become 120. Okay, that's great. नेक्स्ट क्या होना चाहिए, देखो इधर ध्यान से सुनो. ओके, दिस इज E3. लुक एट हियर, दिस इज 120. ओके, इसको क्या करता हूं मैंने, इधर डाउनवर्ड में आधा करता हूं. इफ आई डू आधा, मीनवाइल क्या, नथिंग इज देयर गाइस. E1 को रेजोल्यूशन कर रहा हूं मैंने along this direction and as well as this direction. That's it. Okay. This is a mean axis. From mean axis, देखो इधर, just a minute. Okay, देखो इधर, this is a x axis. No, x axis से E1 थीटा एंगल से बाहर आ गया, मान लो वैसे. ओके, इसको हम कहते हैं E1 cos theta. Correct what I am saying? Sorry. This is angle, no? From this one angle, not this one. Angle जुड़ा हुआ है इधर से. Okay, this is angle. Sorry, guys, this is 90 minus theta होता है. This is theta होता है. Okay, along the x-axis, this is x-axis होता है now, angle से. Okay, it will become E1 cos theta. कितना लगता है इधर, 120 में आधा means 60, means E1 cos 60 degree, right? Similarly, in this direction E3 का होता है, here again E3 का cos function आता है, plus E3 cos 60 degree. Okay, and then perpendicular direction वाला इधर है ना, that is E1 sin 60. in a similar way इधर also E1 sin 60. Correct ना, E1 sin 60, E1 sin 60 same है magnitude and opposite direction. These two will be get cancelled. Remaining net field किधर लग रहा है, downward direction में, इधर है ना. This is net field direction 1, this is E2 in upward direction. Total net field चाहिए means क्या करना है हमको, total net field will be E1 plus E2 plus E3 होगा. That's it, no? Good. Then E1 plus E2 plus E3 means E2 plus E3 means E2 इधर है ना already. Okay, sorry. This is E2, downward direction में E1 plus E3 है. Yes, इधर E1 plus E3. This is E1 plus E3. टाइम कितना हो गया, okay, 3 minutes left. I will finish this one. E1 का वैल्यू क्या है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है guys, 1/2 होता है. Means E1 वैल्यू here, E1 cos 60 plus E3 means again E3 cos 60 है, correct ना. E1 plus cos 60 means 1/2, means E1/2 plus E3 cos 60 means again E3/2, correct ना. Either one more point I want to mention, all the masses are same, hence they can produce the electric field also same, means E1 is equal to E2 is equal to E3. All the masses will be same, field will be same होता है.
We can generally call this one as an E. Correct now. If you put E means here क्या होता है देखो, E1 it is in upward direction. ये सारी के सारी वेक्टर क्वांटिटीज है, डोंट फॉरगेट. प्लस इधर E by 2 plus E by 2 होता है. It is nothing but 2E by 2. 2E by 2. Correct now. But this one will be in the downward direction. That's why we need to put here negative sign. Then 2 to cancel. Here it will become E1 minus R. E minus E. क्या हो गया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0. Means if symmetry is there here, guys, सुनो इधर. This is mass m, this is also mass m, this is also mass m. Okay, on this point x, due to this all the three masses, gravitational field intensity का value क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. Means if the masses are same and they are arranged in symmetry, if masses are same and arranged in symmetry, then net gravitational field at center क्या होता है? 0 होता है. Clear है ना बात? Let me know, is it clear, right? Cool. If it is clear means actually our is in the same question will be continued here. What will be the electric field at gravitational field intensity at y? Y के ऊपर gravitational field intensity कितना होता है? You have to find out this one. This is a homework question to all of you. ये क्या है? Homework question है. Okay. In the next class I will solve this one. Until then, try to solve this problem. Cool. Okay, guys, this is all about today's class. Meanwhile, if you have any questions, please pass your doubt in the chat box. Or else there is no doubt means you can say tata bye bye. Okay. Okay. Bye.